हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑन पाइथन। सो इस ट्यूटोरियल में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इफ़ यू कैन सी दिस लाइक these are the types of data types we have in Python. So first one is int, so the second one is float, then the third one is complex, then fourth one is boolean, so then the next one is string, str for string, then the next one is list, then the next one is tuple, then next one is set, and then dict. So these are the types of data types we have in Python. So अभी हम लोग have given also example. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो int में यहाँ पे for example integer 1 is an integer. तो float इसका example है 1.2. 1.2 is a float type of data. So then complex is 1j is a complex type of data type. So then boolean is like true or false, is called boolean types of data type. So then str string, so hi, this is a string. So if you have anything inside single quote or double quote, so that is considered as a string. So list is like inside the square bracket. If you have, let's say, 1 2, then str also, this is also considered as a string, list. Then tuple is like if you have 1 2 3 and inside round brackets, if you have whatever kinds of data inside round bracket, so that is वो है tuple. तो tuple फिर set is like inside the curly braces. अब अगर true फिर 12 then 3.5, so ये इसको हम लोग set बोलते हैं. फिर dict is dictionary. So इसमें आप लोग let's say I have given like course equals to, this is a kind of key value pair. So course is Python, then topic is data types. So ये with example हम लोग के पास ये सारे डेटा टाइप्स हैं. तो अभी हम लोग अगर देखेंगे कि डेटा टाइप हम लोग को कैसे पता चलेगा कि which one is what kind of data type. So let's say we will print this. Let's say I am going to print bracket type, then inside bracket 1. So let's say we'll print and see 1 is what kind of data type. So if I run this, so let me first, okay, then run this. Yeah, you can see class int. So this is an integer type of data. So similarly, if you type here, if let's say I am taking this 1.2, okay, if I put here v, then if I run this, so if you see here, this is a float. So similarly, if I copy this and put it here, इसको हम लोग यहाँ पे, so this is a complex type of data. So फिर is true or false, if you can take any one of these. So if I put here like true, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आप ये देखेंगे कि this is a boolean type of data. तो फिर अभी इसको हम लोग ये लेते हैं, दिस इज ए स्ट्रिंग. सो हम लोग इधर यहाँ पे डालेंगे, रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए दिस इज ए स्ट्रिंग, क्लास str मीन्स स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप दिस इज. सो अभी ये हम लोग इसको लेते हैं, ये अभी अगर मैं यहाँ पे डालूँगा, ये रन करता हूँ. सो दिस इज ए लिस्ट. Then similarly, if I take this and यहाँ पे डालता हूँ तो this is a tuple. So then this if I take and put it here, so this is a set. Then let's take this, भी इसको यहाँ पे डालते हैं तो ये देखते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ डेटा है. सो नाउ इफ आई रन दिस, सो यू सी हियर, सो दिस इज ए डिक्शनरी टाइप ऑफ डेटा. सो ये है
For now you just know like this, there is another type also present in Python, so that is called none. So this means actually null, nothing. So yeah, so this is all about the data type in Python. So we have these are the basic fundamental types of data types we have in Python. सो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ अगर कोई भी क्वेरीज़ या कुछ डाउट्स हो तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं ट्राई करूँगा मोस्टली आपका जो डाउट्स हैं तो उससे मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा 100%। और thanks for watching this video, and stay happy and blessed. I will see you in the next tutorial. Thank you so much.